वेब स्पेस में इतने सारे शोज, मूवीज और सब कुछ आ रहा है, फ्रॉम ड्रामा टू थ्रिलर टू डॉक्यूमेंट्रीज। एंड इस एरिया में एक चीज जो बहुत टाइम से मिसिंग है, दैट इज फैमिली सिचुएशनल कॉमेडी शोज। यहाँ पे लास्ट टाइम माइंड द मल्होत्रास आया था, विच वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। उससे पहले अगर मैं इंडियन टीवी की बात करूँ, देन खिचड़ी एंड सारा भाई वर्सेस सारा भाई आर द टू शोज जिसपे हम सबका दिल आते हैं। आइकॉनिक शोज, हम सबको बहुत पसंद आए थे। वन द क्रिएटर बिहाइंड बोथ द शोज was none other than आतिश कपाड़िया। अगर आपको पता नहीं है वो कौन है, और अगर आपने सारा भाई वर्सेस सारा भाई देखा है, उस शो में एक कैरेक्टर आता था कच्चा केला, who was played by शर्मन कापड़िया, like that was the name of the character in the show. He is आतिश कपाड़िया एंड उन्होंने ही खिचड़ी और सारा भाई वर्सेस सारा भाई बनाए थे। उन्हीं की बनाई हुई एक और क्रिएशन 2023 में Amazon प्राइम वीडियो पे अब स्ट्रीम कर रही है। द नेम ऑफ द शो इज हैप्पी फैमिली, कंडीशंस अप्लाइड। और इस शो को देखने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मुझे सारा भाई वर्सेस सारा भाई और खिचड़ी के कैरेक्टर के इंटरमिक्स्ड चीजें जो है वो इस शो में देखने को मिली। सो इफ यू लव्ड बोथ ऑफ दैट शोज, देन दिस वन इज डेफिनेटली फॉर यू। एंड हियर आई एम समक्ष मल्होत्रा, इन माय ओपिनियन, गोइंग टू टेल you about the positive and the underwhelming aspects of this show and whether you should binge watch it in this weekend or not. Starting with the icon of the show, रत्ना पाठक शाह। जब हम इनके कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं फ्रॉम सारा भाई वर्सेस सारा भाई, हाउ शी वाज द वन टू रन द एंटायर शो ऑन इट्स शोल्डर्स। एंड इस सीरीज में भी कैरेक्टर्स जो हैं कैन इजीली बिलोंग टू सारा भाई यूनिवर्स, वेयर रत्ना पाठक शाह कैरेक्टर हेमलता दादी जो गुज्जू दादी प्ले कर रहे हैं, ग्लोरियस मिक्सचर ऑफ बीइंग प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव एट द सेम टाइम, लाइक माया सारा भाई। एंड द गुजरातीनेस इन दिस शो एंड द elderly stereotype that's portrayed when it comes to हंसा and बाबूजी, वो सब यहाँ मिक्स अप होके हमें हैप्पी फैमिली में नजर आ रहा है इन द कैरेक्टर ऑफ दादी। एंड व्हेन यू माइट हैव फ्लैशबैक्स इस शो को देखते देखते कि कैसे ओल्ड वाइन इज सर्व्ड इन अ न्यू बॉटल, ऐसी फीलिंग आ जाएगी आपको। द अमैलगमेशन इज डन एक्सपर्टली व्हेन इट कम्स टू पाठक शाह's फैबुलस परफॉर्मेंस, और वो एक मेट्रियार्क प्ले कर रही हैं इन द ढोलकियास फैमिली। एंड उनकी कॉमेडी टाइमिंग तो वी ऑल नो, हम सबने उन्हें सारा भाई वर्सेस सारा भाई के साथ साथ और काफ़ी कॉमेडी शोज और कॉमेडी मूवीज़ में देखा है। एंड वी नो हर कॉमेडी टाइमिंग इज अमेजिंग। उनको ओवर द टॉप ट्रीटमेंट दिया गया है उनके कैरेक्टर को, एंड ऑफ कोर्स हर स्क्रीन प्रेजेंस इज इमैक्युलेट, एंड शी अगेन वंस अगेन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस सीरीज एज वेल। सो इफ यू लाइक रत्ना पाठक शाह, देन डेफिनेटली दिस वन इज अ शो फॉर यू दैट यू शुड बिंज वॉच दिस वीकेंड। कमिंग टू द सिग्नेचर राइटिंग एंड द कैरेक्टराइजेशन, और अब मैं बताऊं तो मुझे आतिश कपाड़िया की राइटिंग बहुत ज़्यादा हिलेरियस लगती है, बिकॉज इट्स वेरी नॉन प्रॉब्लमैटिक जोक्स जो उसमें होते हैं। अगर हम इंडियन टीवी में कॉमेडी का नाम ले, देन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी नाइट्स एंड कपिल शर्मा हमारे दिमाग में आते हैं, बट अ लॉट ऑफ देयर जोक्स आर फैटफोबिक, क्वियरफोबिक एंड बहुत अलग अलग चीज़ें आती हैं दिमाग में, एंड दैट डजंट मेक द एंटायर शो फनी। बट व्हेन इट कम्स टू आतिश कपाड़ियाज राइटिंग, कैरेक्टर्स लाइक दुष्यंत, मधुसूदन फूफा इन सारा भाई वर्सेस सारा भाई, देन हंसा एंड प्रफुल्ल इन खिचड़ी, एंड भारती गोखले इन भाकरवाड़ी, द क्वर्क्स जो इन कैरेक्टर के पास है, द सिचुएशनल कॉमेडी जो वो एग्जिबिट करते हैं, इट्स फैंटास्टिक, एंड दैट इज नॉट लॉस्ट इन हैप्पी फैमिली, कंडीशंस अप्लाई, जहां पे हम वही सेम चीजें कहीं ना कहीं विटनेस करते हैं इन द रोल्स प्लेड बाय परेश कंतारा एंड प्रणोति प्रधान। यही सीन्स दे मेक यू लाफ आउट लाउड। आतिश कपाड़िया की राइटिंग अनडाउटेडली इज द फैक्टर जो इस शो को बहुत हिलेरियस बना देती है, while being emotional at the same time. And once again we are introduced to these epic dialogues, epic one-liners, जैसे कि मैं तो ऑमलेट भी बेसन का ही खाता हूँ। एंड अगर आपको वो कॉमेडी पसंद आती थी when in your childhood days you used to watch these shows, then I'm pretty sure this is something that you'd like as well. And again, coming back to Maya सारा भाई, and do you remember her monologues जहाँ वो मोनिशा सारा भाई की ऐसे इंसल्ट करती थी और उनकी हैबिट्स के बारे में बोलती रहती थी, एंड सेम इज द थिंग दैट इज डन हियर विद हेमलता's कैरेक्टर, एंड शी इज जस्ट टैग रेडी अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए, एंड वो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को क्या क्या नाम से बुलाती है, दैट ऑफ कोर्स अगेन मेक्स इट रियली फनी। नाउ कमिंग अबाउट द कास्ट एंड द परफॉर्मेंसेज ऑफ द कास्ट, नाउ आई लव रत्ना पाठक शाह, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन व्हाई आई वॉच्ड दिस शो।
show. Coming to Atul Kulkarni. Atul Kulkarni को most of the times हमने बहुत ही serious role को play करते हुए देखा है, and I cannot stress it enough कि अतुल कुलकर्णी के साथ साथ यहाँ पे veteran actors like राज बब्बर and आयशा जुल्का को भी यहाँ पे काम दिया है, and they have played such calming elements in this mad ढोलकिया family. One actor that needs me to go off in hats of production is Atul Kulkarni, and his character is so quirky, so lovable, yet extremely adorable, and वो इतनी powerful और dark characters के लिए जाने जाते हैं. But here he is given a Ramesh Dholakia की performance as the elder son of the Dholakia family. It's a very memorable performance, and I'm pretty sure it will stay with you long after you've seen this show. And along with it, इसमें काफ़ी ज़्यादा characters हैं who are great, and with their portrayal they bring a vibe in this show which is very much relevant and is needed in this ensemble cast. Now, where we have talked about the characters and their acting and everything, now let's come to another aspect apart from the theme of the show. Funny के साथ साथ it's emotional at its core. Situational comedy तो इसमें भर भर के डाल रखी है directors ने, and makers walk a thin line between being overlaid dramatic जो पहले shows में होते थे. It's not at all overlaid dramatic in this show, but it has a box of emotions in the setting. Fortunately, यही case Happy Family Conditions Applied के साथ भी है. The show never crosses the line getting too melodramatic or too much frivolous at the same time. And there's one scene which I specifically remember where Raj Babbar's Mansuklal Dholakia explained both his granddaughter-in-law and his daughter-in-law, and that scene has that issue between them is resolved in such heartwarming way that you instantly feel that emotion. But one minor downer in this show, one underwhelming aspect जो मुझे ये लगा कि इसमें situational comedy that was taking a heavier part when it comes to the serious lines of the story. When it came to the emotional parts, वहाँ पर भी the situational comedy was overtaking it. And again यहाँ पे दो stories थी. One was with Tiskaus played by Sahu and her encounter with the leading fashion designer. I also thought that was a bit stretched in this series, because that sequence between all of them, they made a shift from ढोलकियास to their storyline, and हम और चाहते थे कि हम इस शो में ढोलकियास की stories को ही देखें. But coming to overall verdict of this show, the conclusion that I want to tell you is that Happy Family Conditions Applied, this show doesn't just live up to the legacy of Hats Off production when it comes to delivering the witty humor, hilarious situations and some impeccable performance, but along with this, it also makes sure to retain all the values without being a lot preachy, and instead it engrosses progressiveness inside the show and realism as well. So that was all for the day. That was the review of the show Happy Family Conditions Applied. If you've seen this show, let me know in the comments below how did you like it, and while sharing this video with all the lovers of content that you know of, do remember to hit the thumbs up and subscribe to this YouTube channel while pressing the bell icon, so whatever I upload next, you get the notifications first.